Hello, Mathujiman, and you're watching Northeast Express on Unreal TV. The Umsting Block Congress Committee has officially announced Rocky A. Marvin as the party's candidate for the upcoming 2025 MDC election from Umsting constituency during a public meeting on Saturday at the Umsting Auditorium Hall. SW Rimbai District Observer for the Congress Party attended the event and formally declared Rocky A. Marvin as the official candidate for the MDC 2025 election from Umsting. Other prominent attendees included the President of the Riboy District Congress Committee, RBDCC, MG Krashon Blor, alongside other key party leaders. Expressing his gratitude, Rocky A. Marvin shared his joy at being chosen as the Congress candidate and appreciated that overwhelming support from party leaders, supporters and the public. He assured everyone that their steadfast backing would lead to a resounding victory in the upcoming elections. On the occasion, Rocky A. Marvin and other leaders reiterated their commitment to working tirelessly for the party's success. They expressed optimism that the public would extend full support to the Congress Party, which remains dedicated to serving the people with a vision of hope and progress. Supreme Court on Monday sought a sealed cover report from the Manipur government regarding properties, buildings burnt, partially burnt, looted, trespass and encroach upon, along with details of name and address of the owner and who is occupying it and at the moment. Supreme Court also asked the state government to indicate the steps taken by it to ensure that the persons who have trespassed are proceeded against as per law. A bench comprising Chief Justice Sanjeev Khanna and Justice Sanjay Kumar fixed the plea for hearing in the week commencing January 20. In August last year, the top court had ordered the setting up of a committee of 3 former women high court judges to oversee the relief and rehabilitation of victims and compensation to them, besides asking former Maharashtra Police Chief Dattarya Badal Salikar to monitor the probe in criminal cases. More than 160 people have been killed and several hundred injured since ethnic violence first broke out in the state on May 3, 2023, when a tribal solidarity march was organized in the Hill District to protest against the majority Meitei community's demand for scheduled tribe status. A SpiceJet Q400 aircraft operating from Delhi to Shillong was on Monday diverted to Bihar's capital Patna when a windshield crack was observed. According to reports, the diversion was purely a precautionary measure. A SpiceJet spokesperson said that the aircraft made a normal landing and not an emergency landing. Passengers were deplaned normally. Pressurization was normal throughout the flight. टेक्निकल ग्लिच हुई है ऐसा वो बोल रहे हैं, पर एग्जैक्टली कुछ पता नहीं है कि क्या हुआ है. पहले तो बोला वेदर की कंडीशन ठीक नहीं इसलिए इमरजेंसी लैंडिंग कर रहे हैं, पर बाद में जैसे लोग बात कर रहे हैं लग रहा है कुछ टेक्निकल ग्लिच है. तो आप लोग को शिफ्ट किया जा रहा है कहीं पे? अभी ये कह रहे हैं कि शाम की फ़्लाइट है जो अरेंज की गई है गुवाहाटी से, फिर वहाँ से हमें शिलोंग जाना है. मैंने हम लोग का ब्रायन एडम्स का कॉन्सर्ट है कल, तो हम सब उसी के लिए थोड़ा परेशान है कि कब तक जाएंगे. बताया गया है कि क्रैक था इन द विंडशील्ड और इमरजेंसी लैंडिंग होगी. मुझे ऐसे लगता है कि हम बच गए हैं एक तरह से, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एयरलाइंस की होनी चाहिए, सिर्फ स्पाइसजेट की बात नहीं है. बहुत सारे एयरलाइंस में बहुत सारे कंप्लेंट्स आ रहे हैं और इसकी एक चीज़ ज़रा देखना चाहिए, क्योंकि सेफ्टी को लेकर और ऐसी चीज़ें लेकर ये तो देखना पड़ेगा ना सबको. Well, they're saying we're going to fly to Guwahati at 8 o'clock in the evening and then have to drive to Shillong after that. So we are going to go at 8 p.m. from here and we will reach at 2-3 a.m. I'm actually concerned about my safety and the safety of other women. So you all are shifting from where? From airport to? Sorry, now we are going to some hotel. I don't know where. I'm not entirely sure. Okay. Communist Party of India leader D. Raja on Monday reiterated the demand for the
resignation of N. Biren Singh, the Chief Minister of Manipur. He also said that the Armed Forces Special Powers Act, AFSPA, should be removed in the state. The left leader said that Prime Minister Narendra Modi and BJP always claimed nation first. However, he asked if they consider Manipur as part of the nation. Mr. Modi, the Prime Minister, and BJP, they always claim nation first. Our simple question is whether Manipur is part of nation or not. Why Prime Minister is not uttering on Manipur? Why the government is not agreeing for a debate in Parliament on Manipur? Manipur continues to be in turmoil. Violence continues. People are passing through sufferings, hardships, but no political solution. That Chief Minister must step down. That is our demand. He has to step down. Now they have reimposed the Armed Forces Special Power Act. Those acts should be withdrawn. Already people fought and forced government to withdraw Armed Forces Special Power Act. Now again this government has reimposed. We condemn that. And Mr. Prime Minister has not visited Manipur. And he has time to visit all over the world. We have no objection. Let him go to any country. But he must visit Manipur. He must listen to the people of Manipur. He must engage with political parties and stakeholders in Manipur. And in order to find a solution to the crisis and to restore peace and normalcy in Manipur. That is why we are here. Parliament is in session. We ask the government to agree for a special debate, and we ask the Prime Minister to visit Manipur and understand the problems of Manipur and the sufferings of the people of Manipur. One should understand what Ambedkar has said. Parliament is the supreme institution in our democracy. It represents sovereign will of the people. That way, Parliament belongs to opposition. Opposition will always raise issues of national importance, issues concerning people, and it is government. Government should come forward to engage with opposition, run the Parliament. Why government is not running the Parliament? It is government which is making Parliament extremely redundant. Now they are making Parliament to become redundant. This we condemn this. Government should have the responsibility to run the Parliament. A team of Manipur police have arrested one active caterer of proscribed outfit RPF PLA from Imphal West District on Sunday evening. According to police report, the arrested person was identified as 28-year-old Pungta Thaudam at Kamba. He was involved in extortion activities from spa centers located in Imphal area. The police team recovered one mobile headset, one wallet containing a sum of Rs 1,920, one Aadhaar card and one four-wheeler car without registration number from his possession. The arrested person and the recovered items has been handed over to the concerned police station for further necessary legal action, the report added. Joint Action Committee for Recognized Unions JACRU of Qatar and Nagao Paper Mill have called National Company Law Appellate Tribunal's NCLAT order dated 3rd December 2024 to pay the outstanding Provident Fund of employees of both these mills as landmark judgment. Addressing a press conference in Silchar on Monday, JACRU's President Manubendra Chakrabarti said it is Vijay Divas for them as they started an agitation in 2015 and took legal courses to get their hard-earned money in 2019. NCLAT has finally given its order to make the necessary payments to employees of both the mills within the next 21 days. He further said if they were not paid or kept further tangled in legal hassles, then they would have resorted to approaching the Supreme Court and intensified democratic agitations. He informed that PF of Qatar Paper Mill is around 145 crore, while that of Nagao Paper Mill is 130 crore. If interest for delayed payment is accounted for, then they are supposed to be paid a sum of Rs 400 crore. জাক্ৰোৰ দীৰ্ঘ আন্দোলনৰ পাছত স্বৈৰাচাৰী ভাৰত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধত
আমি আইনী যুঁজত এতিয়া জয়লাভ কৰিছোঁ। আজি আমাৰ বিজয় দিৱস। ভাৰতবৰ্ষৰ চৰকাৰত মোদী ডাঙৰীয়া অহাৰ পাছত 2015ৰ পৰা আমাৰ শ্ৰমিক কৰ্মচাৰীৰ দৰমহাৰ পৰা কাটি ৰখা প্ৰভিডেণ্টৰ ফাণ্ডৰ টকা তেখেতে সৰলুকি কৰিছে। একাউণ্টত শ্ৰমিক কৰ্মচাৰীৰ একাউণ্টত জমা দিয়া নাছিলে। তাৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ দীৰ্ঘ আইনী লৰাই চলি আছিল। এই আইনী লৰাই মাজৰে দিল্লী উচ্চ আদালতে আমাক এটা সকাহ দিছিলে, অলপ প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ড ৰিলিজ কৰাৰ কথা কৈছিলে, কিন্তু যে টকাখিনি জমা কৰা নাই সেইটোৰ ওপৰত বিচাৰ এতিয়াও পেণ্ডিং আছিলে। প্ৰথমে NCLATত প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ড অথৰিটি কেছ কৰে, কিন্তু এই কেছটো NCLATত প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ড হাৰি যায়। যেতিয়া NCLATত প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ড হাৰিছে তেতিয়া আমি এই কেছটোত NCLAT প্ৰিন্সিপাল বেঞ্চ নিউ দিল্লীত ইমপ্লিট কৰোঁ এবং এই কেছৰ এপিলত আমিও যোগদান কৰোঁ। আজি আমি ক'বলৈ গৰ্ববোধ কৰি আছোঁ যে ভাৰতবৰ্ষৰ চৰকাৰৰ অত্যাচাৰ, দুৰ্নীতি, শোষণ, শ্ৰমিক কৰ্মচাৰীৰ কাটি ৰখা ধন জমা দিয়াৰ বিৰুদ্ধে নেশ্যনেল কোম্পানী ল এপিলেট ট্ৰাইব্যুনেল দিল্লী বেঞ্চে শ্ৰমিক কৰ্মচাৰীৰ পক্ষত ৰায় দি এটা যুগান্তকাৰী আদেশ জাৰি কৰিছে। এই আদেশটো গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ শ্ৰমিক কৰ্মচাৰীৰ কাৰণে প্ৰযোজ্য হ'ব। এই আদেশত কোৱা হৈছে যে শ্ৰমিক কৰ্মচাৰীৰ কাটি ৰখা যিমানখিনি টকা আছে এই টকা সুদ সমেত আহা 21 দিনৰ ভিতৰত মিটাই দিব লাগিব। এতিয়া আমি যোৱা 7 তাৰিখ আমি ভাৰত চৰকাৰ, প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ড কমিশ্যনাৰ আৰু যিমানখিনি মন্ত্ৰালয় আছে এই অৰ্ডাৰৰ কপি লগাই আমি আমাৰ অৰ্ডাৰৰ কপি ছাৰ্ভ কৰি দিছোঁ। আমি এতিয়া বিশ্বাস কৰোঁ মোদী ডাঙৰীয়াৰ শাসনকালত আৰু অত্যাচাৰ নহ'ব। তেখেতৰ চৰকাৰে শ্ৰমিক কৰ্মচাৰীৰ গোটেই প্ৰাপ্য ধন, অকল প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ড নহয়, গ্ৰেচুইটি, পেঞ্চন, দৰমহা যিমানখিনি পাব লগা আছে অতি সোনকালে তাৰ মীমাংসা কৰি আদায় দিব। নহ'লে ৰাইজে জানিব পাৰিব এই অত্যাচাৰী চৰকাৰৰ অত্যাচাৰৰ কোনো অৱসান নহয়। কিন্তু আমি সকিয়না দি কৈছোঁ, যদি কোনো ধৰণৰ আইনী জটিলতা আৰম্ভ কৰি আমাৰ এই প্ৰাপ্যখিনিৰ বিলম্ব কৰা হয় বা কোনো ধৰণৰ চক্ৰান্ত কৰা হয় তেনেহ'লে আমি বৃহত্তৰ আন্দোলনত যাম আৰু লগতে আইনী লৰাই যেটো আছে এইটো আমি সৰ্বোচ্চতম আদালত সুপ্ৰিম কোৰ্টলৈকে আমি গৈ লৈ যাম, যাতে শ্ৰমিক কৰ্মচাৰীৰ প্ৰাপ্য ধনখিনি আদায় হয়। আমি যুঁজি গৈছোঁ, জাক্ৰো অনেষ্টলি, সিনচিয়াৰলি, ডেডিকেটলি, কনচিষ্টেণ্টলি লৰাই কৰি গৈ আছে। আমাৰ সমস্ত অধিকাৰ কৰিয়ে হিচাপ কৰি নোপোৱা পৰ্যন্ত আমি আমাৰ যুঁজ চলাই যাম। আৰু লগতে যেতিয়ালৈকে কাছাৰ আৰু নগাঁও কাগজ কলৰ উৎপাদন পুনৰাৰম্ভ নহ'ব আমাৰ যুঁজ চলি থাকিব। In a major breakthrough, Churaibari Border Patrol Post team under Sribhumi district bordering neighboring state Tripura were successful in seizing a whopping 44,100 banned cough syrup bottles on Sunday afternoon. Pranab Mili, officer in charge of the police post, informed that a truck was intercepted at the border checkpost. The truck was carrying sacks of potatoes and onions, but a thorough search revealed 294 cartons filled with codeine, phosphate, cough syrup, ASKUF. In all, 44,100 bottles were seized, which is worth more than 3 crore in the black market. These banned cough serums were coming from mainland India and were heading for neighboring Bangladesh via Tripura. Churaibari police sources informed that as of now, the driver of the vehicle and his handyman have been detained for further investigation to ascertain its backward and forward linkages. In the aftermath of the defeat of former MLA George P. Lyangto in 2023 state assembly elections from Meghalaya Sumroi constituency, a significant political shift has taken place. Leaders, members and supporters of All India Trinamool Congress AITC in constituency have parted ways with the party to establish a new platform named the Umroi Constituency Progressive Forum in preparation for the upcoming MDC elections in 2025. The formation of the UCPF is aimed at continuing the commitment
commitment to serving the people of Umroi constituency and organizing efforts to fight candidate for the upcoming MDC elections. George B. Longto and President of Umroi Block TMC and also AITMC President along with Pan Sen Lang Sotun, President of UCPF, shared the rationale behind this decision. Leong To stated that after extensive consultations with leaders and supporters across various areas and units, it was collectively decided to exit the AITC. The UCPF, he emphasized, is a platform dedicated to welfare of the people of the constituency. The forum announced the formation of an election committee responsible for reviewing the finalizing candidature for the MDC election. Interested individuals are invited to submit their applications, which will undergo thorough scrutiny by the committee. ba in ejit kumukot amal election committee gede idap ki nongilam ki bertweet ba haga jigi tray kam sanima don ki experience kula don di su thu ba ki ba ki mai constituency tingin haga ji start jongka election committee yang no makin ni yang metang nimpat kwa ban pen I keteng dulu President Secretary kinong kitkam area jungiru ni penkela BIK bakin long kinong kitkam jongka forum te lakataru namara gijing lengkot jong kupor yimla ban lek man leki unit yamenta shipor ten rei nginang le kita nang ni shikmat ban rung shik unit baro mat persuthu kita gijing thmu jong forum go bagidan te hagaji ailanti gijongi nagaliang jongka forum Namar bangidon ka jing sirhem ban kata ka thong ban kentiu ban trei ban syakri ya kene constituency namar kata dakawai ka sur ka general meeting ka rai ban naga beta kene ke election MDC arajar arpu san syaka kasil autonomous district council kene ke kenhun lana ka forum gejungi kan sei lau jong u kertong jong ka ban airang ha kene ke election te haga jing pun kre ya kene ke election MDC Nagaliang jong ka forum kala thum kerpang ya ke election committee. Takane ke election committee kan sa le ya ki bedon kam baro na kam ta jong ne ka election. Ini subha ban tertib ru si pa jong ka constituency bro koi. Ban nagaliang ke election committee ru ingilai syong ya ke committee tinggal pun kre ha ka bedai bagi kertong ji bedai ban aireng ha ne ka election ke jongi. Tingi kerpat nomor kata ya ki pa ngitip bagi pa jongi keleng a bisa Mano bedai utau kurtong ten rai ikerpat begini Asia bagi sipor apa jong hau ni ubnai Desember bomta ni lala ban pembiang penbit lut ya kita ki boro bat kala ban long ba first week jong January ka forum ka jungi ka declare yo candidate te ni community bagi pajba jungi ni Asia ban ni sipor nomor bagi committee kan hab treistom hakini tayo ki benai ki bomta na ban pembiang penbit ya kini kam jongka baro te kita kilong ki jingwat phang la ne ki thu ki jing penpau ki jing pensai pajba lengba jong pi gelat pathai kubor si pajba jongka Umroi constituency ki jongi te tangi tahi jing penpau jing thu na galiang jongi forum agni por teng ai ku blai dong ki pi baro dengan senang ya kendu pat nang ni shikmat hagini program ki baka forum godon ban yai As opposition stages another day of protests outside Parliament demanding discussions on the Adani issue, Minister of Parliamentary Affairs Kiren Rijiju on Monday said that few issues before the country should not be seen with political lenses and urged the Congress party and its workers to fight unitedly against anti-India forces. Rijiju, while speaking to the reporters in the national capital, said that few issues before the country should not be seen with political lenses. George Soros and his links that have come to light do not see it as an issue relating Congress party. Rahul Gandhi should take the issue seriously if it is related to anti-India forces and added that they do not see this as a party politics. The minister also appealed the leaders of the Congress party and its workers that if their leaders are found to have links with anti-India forces, Congress also should raise their voices and should be united and fight unitedly against anti-India forces, Rijiju told reporters in the national capital. अभी देश में जो मुद्दा सबके सामने में आए हुए हैं गंभीर मुद्दा है। मैं मानता हूं कि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो राजनीतिक दृष्टि से हम नहीं देखना चाहिए।
जॉर्ज सोरोस और उसके जो लिंक्स सामने में जो आए हैं, चाहे राहुल गांधी जी का नाम हो, चाहे सोनिया गांधी जी का नाम हो, हम इसको कांग्रेस पार्टी के रूप से भी नहीं देखते हैं। कोई भी भारतीय अगर विदेशी ताकतों के साथ जो भारत विरोधी है उनसे लिंक होते हैं और भारत का खिलाफ काम करते हैं तो गंभीरता से लेना चाहिए। हम इसको पार्टीबाजी के रूप से नहीं देखते हैं। हम हाउस चलाना चाहते हैं, अच्छी तरह से हाउस चले, हम बिल्स भी पास करेंगे, कई मुद्दे उठाना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसा मुद्दे आते हैं तो उसको हम लोग सदन में नियम के तहत उठा सकते हैं। हमने कांग्रेस पार्टी को भी कहा है और बाकी जितने पार्टियां हैं सबको भी कहा है कि संविधान पे चर्चा 13-14 को लोकसभा में होगा और 16-17 को संविधान पर चर्चा राज्यसभा में होगा। उसके लिए हम तैयार हैं और कांग्रेस पार्टी और अन्य दल भी तैयार रहे। इस बीच में जो संसद में मुद्दे उठते हैं, इसलिए मैं बहुत क्लैरिफाई करना चाहता हूं, इसको साफ साफ मैं कहना चाहता हूं। कुछ मुद्दे हैं हम लोग एक पार्टी और दूसरे पार्टी के बीच में आरोप प्रति आरोप लगाते हैं। कुछ मुद्दे हैं जिसमें राजनीतिक दल अपने अपने पार्टी का सिद्धांत के मुताबिक, और कुछ इश्यूज ऐसे भी होते हैं जो पार्टी स्पेसिफिक भी होते हैं। लेकिन भारत का उभरते हुए ताकत को रोकने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक शक्तिशाली देश के रूप में जो उभर के आए हैं, उसको रोकने के लिए कोई भी ताकत देश के बाहर अगर काम करता है तो उसका खिलाफ हम एकजुट होकर के लड़ना चाहिए। इसलिए कांग्रेस पार्टी के जितने नेता हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, सबको भी मैं कहना चाहता हूं, अगर उनके पार्टी के भी, कांग्रेस पार्टी के भी कोई भी नेता क्यों ना हो, अगर भारत के खिलाफ लड़ते हैं, ऐसा ताकतों के साथ पाए जाते हैं, लिंक होते हैं, तो उस पर एकजुट होकर के आवाज़ उठाना चाहिए। ये गंभीर मामला है। देश का खिलाफ कोई भी काम करता है तो देश एकजुट होना है। इसके लिए मुझे किसी को बोलने का, समझाने का, अपील करने का जरूरत नहीं होना चाहिए। फिर भी मैं याद दिला रहा हूँ कि हम आपस में देश के जो मुद्दे हैं उस पर तो हम चर्चा करते रहेंगे, लेकिन देश के बाहर भारत विरोधी ताकतों के खिलाफ हम एकजुट रहे, इसमें पार्टीबाजी नहीं देखना चाहिए। कौन किस दल के है, हम उस हिसाब से काम नहीं करना चाहिए, एकजुट होकर के काम करना चाहिए। ये मेरा अपील रहेगा। Prime Minister Narendra Modi on Monday inaugurated and addressed the Rising Rajasthan Global Investment Summit, which is being held in Jaipur from December 9 to 11. Addressing the people and media, PM Modi said that India had achieved success in sectors through mantra of reform, perform and transform, and became the world's fifth largest economy and doubled its economy and exports. Further, PM Modi added that a growth in digital data democracy delivery and demograph has been seen through India's success. PM Modi also highlighted that the BJP government was working with the mantra of Vikas Bhi Vilaksat Bhi, which gave equal focus to development and heritage. The Rising Rajasthan Global Investment Summit 2024, taking place from December 9 to 11, has attracted global investors, industry leaders and policy makers. The event, graced by Prime Minister Narendra Modi and the other dignitaries, is a platform to showcase Rajasthan's progress in development, innovation and industrial growth. राजस्थान की बीजेपी सरकार को इस शानदार आयोजन के लिए बधाई दूंगा। साथियों, आज दुनिया का हर एक्सपर्ट, हर इन्वेस्टर भारत को लेकर बहुत ही उत्साहित है। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर चलते हुए भारत ने जो विकास किया है वो हर क्षेत्र में नजर आता है। आजादी के बाद के 7 दशक में भारत दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन पाया था। उसके सामने पिछले 10 वर्ष में
भारत 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी से 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है। बीते 10 वर्षों में भारत ने अपनी इकोनॉमी की साइज करीब करीब डबल किया है। बीते 10 वर्षों में भारत का एक्सपोर्ट भी करीब करीब डबल हो गया है। 2014 से पहले के दशक की तुलना में बीते दशक में एफडीआई भी 2 गुना से अधिक हुआ है। जानते हैं कि आज हर सेक्टर में टेक्नोलॉजी का, डेटा का कितना महत्व है। ये सदी टेक ड्रिवन, डेटा ड्रिवन सदी है। बीते दशक में भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या करीब 4 गुना बढ़ी है। डिजिटल ट्रांजैक्शन में तो नए रिकॉर्ड बन रहे हैं और ये तो अभी शुरुआत है। भारत दुनिया को डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और डेटा की असली ताकत दिखा रहा है। भारत ने दिखाया है कि कैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी का डेमोक्रेटाइजेशन हर क्षेत्र, हर वर्ग को फायदा पहुंचा रहा है। भारत का यूपीआई। That's all we have for now. Keep watching Hornbill TV.